Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shogmojati Lahiri and in this video we are going to start our CA Foundation Paper 1 Principles and Practice of Accounting Chapter 1 Theoritical Framework Unit 5 Contingent Assets and Contingent Liabilities. So let us speak frankly. कंटीजेंट एसेट या फिर कंटीजेंट वर्ड का मतलब क्या है? कंटीजेंट वो है, उसे कहे जाते हैं या फिर कंटीजेंट वो आइटम को कहा जाता है जो आइटम एक फॉर्म में है लेकिन उस फॉर्म को बिलीव नहीं किया जाता है या फिर उस फॉर्म में उसे एक्सेप्टेबल नहीं होता है. कंटीजेंट कैन बी इन अ लेमन टर्म, कंटीजेंट कैन बी दैट आइटम that is in a form, but in that form it is not acceptable or not usable. So in our course or in today's video we can get to know or we will be learning about the word contingent, and also in that process we will be learning about contingent assets and contingent liabilities. So I hope you like my videos and subscribe to my channel. If you like this video, please give this video a like and also subscribe to my channel for more such videos. I am going to make a series of videos regarding CA Foundation preparation and also to clear the doubts of my friends and buddies. So let's start today's video. And yes, if you have any feedback or suggestion, please do not forget to give your feedback or suggestion in the comment section. So let's start. Our next portion or next part, Unit 5, Contingent Assets and Contingent Liabilities. So, as an overview, what is a contingent asset? Contingent asset is a possible asset arises from past events and their existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So, what is a contingent asset? Contingent asset is a possible asset. It is not an asset, but it is possible an asset. It can be an asset. It is a can be asset. A contingent asset is an asset or a possible asset that can take its form or that can be called as an asset, or it can be said or it can be identified as an asset by the occurrence or non-occurrence of any future uncertain event. So contingent asset क्या है? Contingent asset एक possible asset है. वो एसेट नहीं है लेकिन पॉसिबली एक एसेट है जो कि एसेट कहला जाएगा जब फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है या फिर नहीं होता है तब. नेक्स्ट, कंटीजेंट लायबिलिटी. कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन arising from past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So, as we can understand, contingent asset and contingent liability are the opposite to each other. Contingent liability is a possible obligation that can be called as an obligation or liability by the occurrence or non-occurrence of any future uncertain event. Contingent liability वो फ्यूचर लाइबिलिटी है या फिर एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन या फिर लाइबिलिटी है जो कि एक ऑब्लिगेशन या फिर लाइबिलिटी कहला जाएगा जब फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है या तो होता है या फिर नहीं होता है तब. सो हमारा टॉपिक शुरू होता है कंटीजेंट एसेट. कंटीजेंट एसेट. Contingent asset may be defined as a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed
only after occurrence or non-occurrence of one or more future events not wholly within the control of the enterprise. एक इवेंट जो है वो अनसर्टन कब होता है? जिस इवेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता है एक फर्म का या फिर एक एंटरप्राइज का, तब उसे हम अनसर्टन कहते हैं. Whenever a firm or an enterprise or any person does not have full control or entirely is able to control an event, that type of event is known as uncertain event. We all know that and we understand that. That is why our first topic, contingent asset. So what is a contingent asset? Contingent asset may be defined as a possible asset. It is not an asset but a possible asset. A contingent asset is importantly a possible asset. It is not an asset. A contingent asset may be defined as a possible asset that arises from past events whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. The future events should be uncertain, not wholly within the control of the enterprise. Uncertain तब भी होता है जब enterprise का full control नहीं होता है, तब इसीलिए हम लोग अगर uncertain future events ही कह देते हैं तब भी उस definition का एक complete form दिखाई देता है. So अगर आप definition लिखना चाहोगे ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे इस पोर्शन को लिख देना. कंटीजेंट एसेट इज यहाँ से नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स. यहाँ तक भी अगर लिख दोगे, आई एम सेइंग दिस फॉर दोज पर्सन हु कैन नॉट मेमोराइज. अगर आप रट्टा नहीं मार सकते हो ना, तब इस पोर्शन को समझ के लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा. मैं भी आपकी जैसा ही था, मैं रट्टा बिल्कुल नहीं मार पाता हूँ. आप कह सकते हो मैं याद भी नहीं कर सकता हूँ एक चीज को, इसीलिए मैं समझ लेता था. और समझ के अगर लिख दोगे, ये पॉइंट अगर साफ साफ लिख दोगे या फिर समझा दोगे एग्जामिनर को, आपको मार्क्स मिल जाएगा. It usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits in the business entity. एक एसेट कब होता है? एक एसेट तब भी होता है जब उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिले. एक मशीनरी को एक एसेट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उस मशीनरी से गुड्स प्रोड्यूस होगा जिसे एक बिजनेस सेल कर सकता है. इनडायरेक्टली वो मशीनरी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है उस बिजनेस के लिए. Why an asset is called an asset? An asset is called an asset because it is able to generate an economic benefit. A machinery is called an asset because a machinery can produce goods that a business can sell and make profits or earn money. Indirectly, that machinery is including cash into the enterprise or is resulting to a economic benefit of cash inflow for the enterprise. That is why it usually arises from unplanned and unexpected events. अगर एक इवेंट अनसर्टेन होगा तब भी अनप्लान्ड होगा या फिर अनएक्सपेक्टेड होगा. इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सप्लेन किया जा चुका है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. सो यहाँ पे मैं लिख देना भी चाहता हूँ, ये डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अनसर्टेन इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल्स टू बट इक्विवेलेंट टू. अगर मैं I hope you understand this. What is equivalent? Uncertain is equivalent to unplanned. It is also equivalent
to this term unexpected, uncertain equivalent to unplanned, and it is also equivalent to unexpected. अगर आप ये अनसर्टेन वर्ड ही यूज कर दोगे ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। मैं भी ऐसा ही किया था, इसीलिए बता रहा हूं। अगर आप याद कर सकते हो देन डोंट टेक माई सजेशन और डोंट टेक माई एडवाइस। अगर आप याद कर सकते हो, याद कर लेना, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain, it is a contingent asset. अगर एक कंपनी का कुछ क्लेम है जिससे उस कंपनी के लिए कैश इनफ्लो हो सकता है, लेकिन उस लीगल प्रोसेस का जो रिजल्ट है या फिर जो आउटकम है वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है, तभी उसे हम कंटिंजेंट एसेट कहते हैं, जिसका आउटकम या फिर रिजल्ट जो अनसर्टेन है या फिर जो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं। So now coming to our next topic, it's not next topic, next paragraph. Contingent asset, next paragraph. As per the concept of prudence as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. जो भी हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट कर चुके हैं यूनिट 2 में, उसके अकॉर्डिंग कंटिंजेंट एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना गलत है या फिर अलाउड नहीं है। We, as per the concept of prudence, we say that account for all possible losses and liabilities, but you are not liable or you do not anticipate any possible asset or any possible gain. So we must anticipate for possible losses or liabilities, and that is why any possible gain or an inflow of cash or any economic benefit is not shown in the books of accounts as per the prudence concept. So as per the concept of prudence, we have learned this. As per the concept of prudence as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. एक contingent asset को prudence concept के according या फिर जो present accounting standard चल रहा है उसके according contingent asset को recognize करना मना है या फिर एक वो allowed नहीं है। These assets are uncertain and may arise from a claim which an enterprise pursues through a legal proceeding. ये जो एसेट्स है वो अनसर्टेन है, जिसके लिए उसका जो क्लेम है वो लीगल प्रोसीडिंग के एक अनसर्टेन आउटकम पे या फिर अनसर्टेन रिजल्ट पे डिपेंडेंट है। देयर इज अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम। उस क्लेम का रियलाइजेशन में अनसर्टेनिटी है। देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम। It is possible that recognition of contingent assets may result in recognition of income that may never be realized. Contingent asset को रिकॉर्ड कर लेना ऐसा दिखाएगा कि एक इनकम हो चुका है, लेकिन यह भी हो सकता है वो इनकम कभी भी जनरेट ना ही हो। Contingent recording a contingent asset is equivalent to recording an income. But it is possible that income, that recorded income will not be evident or will not occur or will not be earned. It would mislead the users. So what is the final destination or what is the final usage of a financial statement? Financial statement is used to help the users, and it is used to show the correct result or correct outcome of the business. So if an income is not shown properly, it might mislead the users, and that is why it is said it is possible that recognition of a contingent asset
may result in recognition of income that may never be realized. However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remains a contingent asset. जब उस contingent asset का या फिर उस income का कुछ भी certainty होता है या फिर एक certain portion recover होना ये तय हो जाता है, तब उसे contingent asset नहीं कहेंगे. When an income or revenue is certain to be earned, then it should not be called as a contingent asset. That is why it said, however, when realization of income is virtually certain, when realization of income is virtually certain, जब virtually certain हो जाए उसका recognition is virtually certain, then related asset is no longer called a contingent asset. So, next paragraph, a contingent asset need not be disclosed in financial statements. एक contingent asset को financial statements में recognize करना mandatory नहीं है या फिर allowed भी नहीं है. A contingent asset is usually disclosed in the report of approving authority, that is board of directors in the case of a company. Contingent asset जो है वो approving authority के report में लिखा जाता है. For एक approving authority कौन है? Approving authority एक business के लिए वो authority है जो उस business को control करता है या फिर look over करता है. For a company, it is the board of directors. For a partnership firm, it might be the partners. For a sole proprietorship business, it might be the proprietor himself, who is the approving authority. And that is why a contingent asset is usually disclosed in the report of approving authority. If an inflow of economic benefit is probable, when to disclose a contingent asset in the report of approving authority? When inflow of economic benefit is probable. जब economic benefit का inflow होना probable होता है या फिर उसका कोई probability, positive probability होता है, तभी contingent asset को जो approving authority है उनके reports में लिखा जाएगा. So, मैं लिख देना चाहता हूं थोड़ा बहुत. If, sorry for my handwriting, but if you are not able to understand, please write me in the comment section. I will try to improve myself. I'm also trying to improve, but please adjust. If inflow of economic benefit, ECO, economic benefit is probable, disclose contingent asset in approving authority report. I hope you are able to understand. If inflow of economic benefit is probable,
disclose contingent asset in approving authority report and not in financial statement. Okay, FS means financial statement. So we need to disclose this. If an economic benefit is probable, we need to disclose the contingent asset in the approving authority report and not in the financial statement. I hope it is clear. The point is clear. You can also make a note for your better understanding and also for your better reference or your better revision during your examination or one day before examination. Contingent assets. So next, contingent assets are assessed continually, and if it has become virtually certain, then that in the inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statements of the period in which the change occurs. If there is a change in the probability, there is a positive probability that an inflow of economic benefit will occur, then and there itself, in that accounting period itself, the contingent asset is recorded as a proper asset or an asset. So contingent assets are assessed continually if they become virtually certain. If the recovery of that asset or recovery of the income becomes virtually certain, then the inflow of economic benefits will arise. The asset and the related income recognized in the financial statements. This is the story of a contingent asset. Now, our next topic is contingent liability. Our next topic, contingent liability. I hope this statement is clear, loud and clear. Our next is contingent liability. So, what do you understand by contingent liability? I hope you have got the point of contingent assets. Contingent liability is just the opposite. So, our next topic is contingent liability. Contingent liability. The term contingent liability can be defined as a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise. So same point over here, uncertain future events. Uncertain means that on that events the firm or the company or the enterprise does not have proper or entire control or does not have whole control. That is why a contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Contingent liability is also a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that the outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Number two, a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Reliable estimate cannot be made. Not probable the outflow of resources required to settle the obligation. It is a present obligation. So, in this point, we can see two complications. Contingent liability has two definitions. Contingent liability is that possible obligation which gives rise due to a past event but whose occurrence and non-occurrence, occurrence or non-occurrence depends on the occurrence of one or more future uncertain events.
I repeat, contingent liability is the possible obligation, the existence of which depends on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Contingent liability is also that present obligation whose amount whose outflow of resources is not certain, or it is uncertain that there would be any outflow of resources to settle the obligation. Number 2, a reliable estimate of the liability cannot be made. कंटीजेंट लाइबिलिटी का दो डेफिनेशन होता है. एक ही डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा ट्वीच करके थोड़ा डिफरेंस किया गया है. कंटीजेंट लायबिलिटी वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो कि एक पास्ट इवेंट के वजह से क्रिएट होता है, लेकिन जिसका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का ऑकरेंस या फिर नॉन ऑकरेंस के ऊपर. अगर कुछ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट ऑकर हो जाता है तब उस कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस हम लोग मान लेंगे या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे. नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी. कंटीजेंट लायबिलिटी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है जिसका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन या फिर उसे हम उसका प्रोबेबिलिटी बहुत लो होता है या फिर अनसर्टन होता है कि एक ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, या फिर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसका एस्टिमेट वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, उसे भी हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्रेडिटर होने जा रहा है. मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरा 10 लाख का सामान क्रेडिट पे खरीदना पड़ेगा. ये एक लायबिलिटी हो गया, लेकिन मुझे एस्टिमेट ही नहीं पता कितने का क्रेडिट मुझे लेना पड़ेगा, कितने का लोन मुझे लेना पड़ेगा. इन दैट केस दैट बिकम्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी. अगर एस्टिमेट नहीं भी रहेगा कुछ ऑब्लिगेशन का, उस इन दैट केस आल्सो इट वुड बी कॉल्ड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल, if there is a liability on me regarding any case or any legal case on which I am the respondent or I am the one on whom the case is made or the legal steps are taken, but being the respondent, I am unable to assess or estimate the amount of liability or obligation that needs to be paid to the complainant. In that case, that type of liability is also called a contingent liability. एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, मेरे ऊपर एक कोर्ट केस हो चुका है. जिस कोर्ट केस का जो लायबिलिटी होने जा रहा है, मैं उस वैल्यू को एसेस या फिर एस्टिमेट नहीं कर सकता. उस टाइप ऑफ कोर्ट केस का लायबिलिटी जो है उसे हम लोग कहेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी. अ कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन arising from past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. That is the part A of the definition. So let us divide this definition into two sections. I will be marking them with two different colors. So our first portion, a contingent liability is a possible obligation arising from past events and may arise on future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. That is the part A definition. Now our next part definition, a contingent liability may also be a present obligation that arises from past events. A contingent liability may also be present obligation that arises from past events.
whose obligations estimate cannot be made, or the estimate of outflow of resources is not possible. So to simplify, I can write over here, if you allow, contingent liability. So I need to write a bit smaller. Here I am going to write contingent liability. Contingent liability. Contingent liability are of two types. Number one, contingent liability is a possible obligation contingent liability is a possible obligation whose existence is dependent on occurrence or non-occurrence of uncertain future future events. Again, I'm saying sorry for my handwriting. I am new to this stylus, and yes, this is my first experience writing with a stylus. So contingent liability is a possible obligation. Contingent liability is a possible obligation. Contingent liability is also a present obligation. Whose estimate for outflow of resources or liability amount is not possible. So in short, I can explain the theory of contingent liability within these two pointers. Contingent liability is a possible obligation whose existence is dependent on occurrence or non-occurrence of uncertain future events. Contingent liability is also a present obligation whose estimate for outflow of resources
or the amount of liability is not possible. The estimating or calculating the outflow of resources or the liability amount is not possible. That is also a contingent liability. Our next paragraph: an enterprise should not recognize a contingent liability in balance sheet. However, it is to be disclosed in the notes to accounts. एक एंटरप्राइज जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को दिखाना उस एंटरप्राइज का ड्यूटी में पड़ता है या फिर उस एंटरप्राइज के लिए मैंडेटरी हो जाता है. Disclosing a contingent liability for an enterprise is mandatory, but not in the balance sheet. The enterprise should recognize or show the contingent liability in the notes to accounts of that enterprise, of that financial statement of the enterprise. So, an enterprise should not recognize the contingent liability in the balance sheet. However, it is required to be disclosed in the disclosed in the notes to accounts, of the financial statements, unless possibility of outflow of resources embodying the economic benefits is remote. जब तक outflow of resources का possibility confirmed या फिर certain नहीं हो जाता है, तब तक contingent liability को balance sheet में नहीं लिखा जाएगा. Until and unless the probability of outflow of resources is certain, we cannot, or an enterprise cannot, write the contingent liability in the balance sheet. These liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits has become probable. There is a continuous determination or continuous assessment to assess a contingent liability's probability or the occurrence or non-occurrence of any uncertain future event on which the recognition of that contingent liability is dependent. If it becomes probable that the outflow of future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability, a provision is recognized in financial statements of the period in which the change is in probability occurs, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made. So, let us understand this in detail. If it becomes probable that an outflow of future economic events will be required for an item previously dealt with as a contingent liability. For an item that was recorded as a contingent liability, if the recognition of that contingent liability becomes certain, or the uncertain future event on which the contingent liability was dependent on becomes certain, in that case, a provision is recognized in the financial statements of the period in which the change of probability occurs. In the accounting period when the change of probability of that liability, that contingent liability occurs, in that year itself, a provision is recognized in the financial statements unless and until there is any case when the estimate cannot be made. If the estimate can be made of the liability, then surely an provision is created. जब भी जिस अकाउंटिंग पीरियड में भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाता है या फिर सर्टेन हो जाता है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जिस्टेंस कंफर्म या फिर सर्टेन हो जाता है, उस अकाउंटिंग पीरियड में ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर एक प्रोविजन को क्रिएट किया जाता है, इसे दिखाने के लिए उस कंटीजेंट लायबिलिटी अब सर्टेन हो चुका है. प्रोविजन का वैल्यू क्या रहेगा?
प्रोविजन का वैल्यू रहेगा जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है उस लायबिलिटी का। अगर कुछ भी एस्टिमेट नहीं निकाला जा सकता है तब उस कंटीजेंट लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी के जैसा ही छोड़ देने का एक रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है या फिर उसे छोड़ देना पड़ता है। Distinction between contingent liabilities and liabilities, that is, it is a difference contingent liabilities versus liabilities. Distinction between contingent liabilities and liabilities. So it can be said contingent liability versus liability. The distinction between a liability and a contingent liability is generally based on the judgment of management. The distinction between the liability and a contingent liability is dependent on the judgment of management. If the management decides it is a contingent liability, then it is a contingent liability. Otherwise, it becomes a liability. A liability is defined as the present financial obligation of an enterprise. What is a liability? It is the present financial obligation of an enterprise. एक एंटरप्राइज का जो भी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अब भी चल रहा है या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं, which arises from past events. The settlement of liability results in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits. एक लायबिलिटी को सेटल करने के लिए उस एंटरप्राइज से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट रिसोर्सेज का आउटफ्लो होता है। उस रिसोर्स जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो उसका आउटफ्लो होता है। To settle a liability, there is an outflow of resources. Which resources? Outflow of that resources which carry an economic benefit for the enterprise. On the other hand, in the case of contingent liability, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. In the case of a contingent liability, outflow of resources to settle the obligation is not probable, or amount expected to be paid cannot be measured. कंटीजेंट लायबिलिटी का केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का जो प्रोबेबिलिटी है वो अनसर्टेन होता है, या तो अनसर्टेन होता है उस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का प्रोबेबिलिटी, या फिर अमाउंट जिसके जो भी अमाउंट का रिसोर्स पे किया जाएगा उस अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट या फिर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं एक रिलायबल तरीके से, तब भी उसे हम एक कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। Examples of contingent liabilities are claims against the enterprise not acknowledged as debts, guarantees given in respect of third parties, liability in respect of bills discounted, and statutory liabilities under disputes, etc. Examples. These are the examples of contingent liabilities. The examples of contingent liabilities are claims against the enterprise not acknowledged as debts, guarantees given in respect of third parties, थर्ड पार्टीज को जो भी गारंटी देता है एक कंपनी या फिर एक एंटरप्राइज उस गारंटी को भी कंटीजेंट लायबिलिटी कह सकता है। लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, उस बिल्स का जो लायबिलिटी है उसे पे किया जाएगा उसका कुछ प्रोबेबिलिटी उसका कुछ एविडेंस नहीं होता है, इसीलिए उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल को साइन पेएबल के तरीके से साइन कर दिया हूं, लेकिन जो ड्रॉयर है वो उस बिल को डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन वो
फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो जो बिल है, वो जो डिस्काउंटेड बिल है, वो क्लेम या फिर उसको हम लोग टैली या फिर उसको हम चुका पाएंगे कि नहीं। इसीलिए उस बिल, डिस्काउंटेड बिल को हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज अंडर डिस्प्यूट। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, उसके अंदर जो भी स्टैट्यूटरी या फिर लीगल रिक्वायरमेंट होता है या फिर लीगल जो अमाउंट होता है जो पेबल हो जाता है, उसे भी हम लोग कहते हैं कि वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्यों? उस डिस्प्यूट का जो भी आउटकम है वो भी सर्टेन नहीं है अभी तक, इसीलिए वो भी अनसर्टेन हो जाता है एंड वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाता है। In addition to present obligations that are recognized as liabilities in balance sheet, enterprises are required to disclose contingent liability in the balance sheet by way of notes. Contingent liability को भी disclose करना mandatory होता है, लेकिन कहाँ? Balance sheet में नहीं, कहाँ पे? Notes to accounts में। So यहाँ पे भी एक notes मैं बना देता हूँ इस छोटी सी जगह पे एक नोट्स यहां पे मैं बना देता हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज shown in notes to sorry for the inconvenience. Contingent liability is shown in notes to accounts मैंडेटरीली कंटीजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है या फिर दिखाने का एक रूल भी बन चुका है। Our next topic, distinction between contingent liabilities and provisions. Contingent liability में और provisions में क्या difference होता है? Provision means an amount, any amount or written off or retained by way of providing for depreciation, renewal of diminution in the value of assets, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. प्रोविजन एक अमाउंट है जो कि राइट ऑफ होता है या फिर एक अमाउंट से रिटेन होता है, किसके लिए? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ एसेट का डिमिनिशन ऑफ वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कुछ नॉन लाइबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए, जिसका जो अमाउंट है जिसको हम लोग सब्सटेंशियल एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। Provision is that amount. So here, for your better understanding, I'm cutting this domain substantial accuracy. I'm writing over here with black pen itself. I'm writing for your better understanding. Determined with
substantial accuracy. So, what is a provision? Provision means any amount that is written off or retained for providing for depreciation or a diminution in the value of an asset, or to is retained or written off to provide for any liability or obligation whose value or whose amount cannot be determined accurately with substantial accuracy. So let us mark it up. Provision means an amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or diminution in the value of assets, retained by way of providing for known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. I hope you were able to get. If you have any problem, please write me in the comment section. I will try once again to explain this topic to you. So now it's in pointers, the differences. So let us study from here. Let us study individually. First, provision. Provision is a present liability of uncertain amount. It is a present liability with uncertain amount which can be measured reliably but using a substantial degree of estimation. Using a substantial degree of estimation, कुछ estimation लगा के जिसका value measure किया जा सकता है उसे हम लोग provision कहते हैं. Provision एक present liability है जिसका amount uncertain है. Now contingent liability. Contingent liability is a possible obligation. As we have learned earlier, contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize, that is may or may not occur, depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. We already know this. Next point, a provision meets the recognition criteria. A provision meets the recognition criteria, that is, it can be recognized in the books of accounts, that is in the balance sheet and financial statements. A contingent liability fails to meet the same. A contingent liability cannot be recognized in the financial statements, in the balance sheet. That is why it fails to recognize, it fails to be recognized or meet the recognition criteria. Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past events. An enterprise has a present obligation arising from past events. An outflow of resources embodying economic benefits. Number B, a reliable estimate can be made of the amount. So we all know for a contingent liability, reliable estimate cannot be made. Let us study. Contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that the settlement of those obligations will require outflow of economic benefits. The outflow of economic benefits is not certain, or amount of the outflow cannot be reliably estimated. We have already studied this. I hope you remember. Provision. If the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes a provision. If management estimates that it is probable that a settlement of obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes it as a provision in the balance sheet. Next, contingent liability. Contingent liability, if the management estimates that it is less likely that an economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as a contingent liability. मतलब contingent liability का probability कम होता है, provision का contingent जो provision है उसका probability ज़्यादा होता है. तो मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन. प्रोविजन वो प्रेजेंट लाइबिलिटी है
जिसका अमाउंट अनसर्टेन है, जिसको तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट एक एस्टिमेट के आधारित होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसका होना या फिर ना होना एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोविजन जो है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है। एक प्रोविजन को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन एक कंटीजेंट लायबिलिटी है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग उसे बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। प्रोविजन तब होता है जब एक एंटरप्राइज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक एस्टिमेशन लगा लेता है। जब भी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए कुछ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा तब भी उसे हम प्रोविजन कहते हैं। या फिर एक प्रोविजन तब भी होता है जब एक रिलायबल एस्टिमेट बन जाता है कि कितना अमाउंट कंपनी से या फिर फर्म से निकलने वाला है। कंटीजेंट लायबिलिटी तब भी होता है जब एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का प्रोबेबिलिटी कम होता है, या तो उस जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है उसका अमाउंट जो है वो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी बना देते हैं। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो या फिर उसका अमाउंट जो है उसे हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसका जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसे कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अगर देखता है कि एक ऑब्लिगेशन के लिए एक अमाउंट को पे करना जरूरी है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना एकदम श्योर है या फिर बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, तब उसे हम प्रोविजन कहते हैं। जब उस लायबिलिटी का उसकी ऑब्लिगेशन का जो प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके वजह से उस ऑब्लिगेशन की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, तब उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। जब प्रोबेबिलिटी कम होता है तब कंटीजेंट लायबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है तब प्रोविजन। So let us take an example. As given in the study material. Let us take an example to understand the distinction between a provision and a contingent liability. The Central Excise Officer imposes a penalty on Alpha Limited for violation of a provision in the Central Excise Act. The company goes on an appeal. If the management of the company estimates that it is probable that the company will have to pay the penalty, it recognizes a provision for the liability. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellate authority will be in its favor, and it is less likely that the company will have to pay the penalty, it will disclose the obligation as a contingent liability instead of recognizing a provision for the same. तो इसे हम हिंदी में समझते हैं। अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है, एक सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है। जो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है अल्फा लिमिटेड के ऊपर एक पेनल्टी के लिए अपील कर देता है, एक पेनल्टी डाल देता है। लेकिन उस पेनल्टी के लिए कंपनी अल्फा लिमिटेड जो है अपील करता है किसके पास? एपेलेट अथॉरिटी के पास। अगर ये प्रोबेबल है, अगर मैनेजमेंट ये मान लेता है कि अल्फा लिमिटेड को ये जो पेनल्टी है उसे देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा, तब उस अमाउंट को, उस पेनल्टी को हम लोग प्रोविजन कहते हैं। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट है वो देखता है या फिर एसेस करता है कि उस अल्फा लिमिटेड जो कंपनी है, अल्फा लिमिटेड को वो पेनल्टी को देना नहीं पड़ेगा, वो पेनल्टी माफ हो जाएगा, तब उस अल्फा लिमिटेड का जो पेनल्टी है उस पेनल्टी अमाउंट को हम लोग
कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो समय अभी बाकी है, लेकिन इस पॉइंट्स को समराइज कर देते हैं। लेट्स समराइज द पॉइंट्स। A contingent asset may be defined as a possible asset that arises. It is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the enterprise. Number two, a contingent liability is a possible obligation. It is a possible obligation arising from the past events and may arise in future depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Number three point, a liability is the present financial obligation of an enterprise. Liability is the present financial obligation of an enterprise which arises from past events, whereas contingent liability is a possible obligation arising from past events. दोनों ही पास्ट इवेंट से, लेकिन जब वो प्रेजेंट हो जाता है उस ऑब्लिगेशन, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। जब वो ऑब्लिगेशन पॉसिबल रहता है तब उसे हम कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. Provision क्या है? Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using substantial degree of estimation. Whereas contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So that's all for today. That's all for this video. If you understood the topic, understood the theory, please give this video a like and subscribe to my channel for more such videos. Signing off, stay safe, stay healthy and keep studying. Thank you and visit again. Keep subscribed. Bye bye.